ओके सो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन पार्ट 2 ऑफ दिस गेम मार्था इज डेड में। तो गाइज हम लोग जो है अभी फिलहाल हम लोग जो है मार्था के रूम में है, यानी कि मार्था और यूलिया के रूम के अंदर है फिलहाल। एंड बता दूं कि पिछले पार्ट में जो है हमने देखा था कि मार्था जो है मर चुकी है। तो पिछले पार्ट में हमें ये चीज़ का पता चला था कि मार्था जो है मर चुकी है। एंड अभी फिलहाल हम लोग जो है मार्था बन के रह रहे हैं हमारे पेरेंट्स के सामने। तो मतलब इसके पेरेंट्स के सामने बेसिकली हम लोग मार्था बन के झूठ मूठ का रह रहे हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सीन चल रहा है अभी फिलहाल। एंड अभी एक चीज़ है जिसका हमें आंसर चाहिए, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस गेम में। वो ये है अभी तक कि मार्था की डेथ तो हो गई थी लास्ट पार्ट में, लेकिन कैसे हुई, किसने की, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। एंड शायद से इस गेम में हम लोग उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आगे जाएंगे एंड उस चीज़ को जानेंगे। एंड जब से मार्था की डेथ हुई है ना, तब से यूलिया को जो है, यानी कि हमारा ये जो कैरेक्टर है इसका नाम यूलिया है, तो यूलिया को काफ़ी सारे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे बुरे सपने आ रहे हैं मार्था के ऊपर, मतलब मार्था के बारे में। एंड काफ़ी उसको मतलब काफ़ी बहुत बुरे सपने आ रहे हैं इन शॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो फिलहाल हम लोग जो है थोड़ी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं इस रूम के अंदर। तो ये है मार्था का कबर्ड, तो एक बार देखते हैं। Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. ओके ठीक है, तो हम लोग फिलहाल मार्था के कपड़े पहन रहे हैं। चलो लेट्स वेयर दिस। ओके ठीक है, ये क्या है, ये बॉक्स? This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. ओके तो ये भी शायद से कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा हमारा इस गेम में। तो इसके बारे में हमें कुछ भी अभी तक क्लू नहीं मिला है इस बॉक्स के बारे में। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस बॉक्स को देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है तो वो हमें पता चल सकता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली मार्था के साथ। एंड मतलब क्या क्या चीज़ें रखी है मार्था ने अपने उस बॉक्स में। I always keep my trinket box. ओके तो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है बाहर, ठीक है। फिलहाल Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. ओके आई फील लापो ना, हाँ, तो उसने जिसका नाम लिया लापो, शायद से मुझे लग रहा है ये उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। The butterfly collection that Daddy made for me. ओके Nanny will be visiting me soon. ठीक है, चलो तो अभी बाहर निकलते हैं। Everything I need is always in my bag. ओके ओपन द बैग, तो हम लोग ऐसे खोल सकते हैं बैग को। वाओ, ओके The key to my trinket box. ओके तो हमें चाबी मिल चुकी है ये बॉक्स की, तो लेट्स ओपन इट। लेट्स सी इसके अंदर क्या हमें मिलेगा। Here is my diary. ओके July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. ओके
July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Okay. July ठीक है. Yes, Huey, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Okay. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. ठीक है, चलो. तो इसका मतलब कि शायद से इसके पेरेंट्स जो मॉम डैड है वो शायद से कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है. ठीक है. LB टू रन. वाह. ओके, चलो नीचे चलते हैं फिलहाल. ये तो हमारा रूम है, यूलिया. यप. It's locked. Strange. Why did they lock my room? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. ओके. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. ओके. तो ठीक है. अब जाके हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स का ऑप्शन मिल रहा है. इसमें लिखा रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं. तो फिलहाल ओके. तो ये है फिलहाल हमारे ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो है मार्था बन के रह रहे, अपने पेरेंट्स के सामने हम लोग जो है मार्था बन के रह रहे. इसलिए जो है इसके मॉम डैड को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम यूलिया है, तो हमें वो उसको डाउट नहीं देना है. तो इसलिए हम लोग जो भी मार्था जो भी चीज़ें करती थी ना, हमें वैसे ही एक्ट करना है, हमें वैसे ही रहना है. तो इसमें हमें एक पहला तो न्यूज़पेपर पढ़ना है. उसके बाद जो है द फ्रेम, तो इसमें हमें कुछ कैमरा के साथ करना है. ठीक है. वो जो फ्रेम था, एम्प्टी फ्रेम आपने देखा था, उसमें हमें एक फ़ोटो डालनी है खुद की. तो वो एक चीज़ करनी है. तो उसके लिए हमें कैमरा को यूज़ करना पड़ेगा. तो कैमरा भी इधर ही पड़ा है टेबल पे. तो ठीक है, चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं सबसे.
Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the ठीक है truth. तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस गेम में कि मार्था के डेथ के बारे में, कि मार्था मरी कैसे, तो उसके बारे में पूरा वो मिस्ट्री है। तो वो पूरे गेम में वही चीज़ चलते रहने वाली है। उसके लिए ही हमें घूमते रहना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टोरी है फ़िलहाल। तो मैं एक बार ऑब्जेक्टिव्स देख लेता हूँ कि ये हो गया क्या। ये हो गया ना, ठीक है, ये हो गया, हमने पढ़ लिया है। तो ये अभी करते हैं द फ्रेम वाला। तो उसके लिए कैमरा, Chocolate, a privilege for few people in these ठीक है, times. कैमरा ले लेते हैं सबसे पहले। For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. ओके, There are so many of them out here. ठीक है। तो एक, हाँ, तो देखो, There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. ठीक है। तो फिलहाल हमें टेस्ट करने के लिए कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें जो है बाहर जाके किसी बर्ड का, यानी कि स्पैरो का हमें फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे बाहर जाके। लेकिन फ़िलहाल मैं दिखा दूँ कि मार्था की जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे है। बेसिकली इधर ही है, इधर ही रखी हुई है आगे, देखो। तो ये है वो जगह। Oggi Bonsi. On the day of Saint Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falcium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation... Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascarello, Carl H. ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये है मार्था, ठीक है, ये है मार्था की डेड बॉडी। तो इसके पूरे फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए जो है इसके मॉम डैड बाहर गए एंड हमें फ़िलहाल जो है वो कैमरा से हमें फ़ोटो खींचनी है एंड वो एक ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं सबसे पहले। एंड एक और चीज़ गाइस मुझे बतानी थी इस गेम के बारे में, यानी कि ये जो फैमिली है ना उसके बारे में, कि इस फैमिली में बेसिकली क्या है कि इसके जो मॉम डैड है उसमें मतलब ये मुझे लास्ट पार्ट में पता चला था, इसके पहले वाले पार्ट में। तो सिनेरियो ऐसा है कि इसके मॉम डैड में से जो इसके डैड है वो दोनों को इक्वली लव करते हैं। उसके दोनों डॉटर्स, ये दोनों जो है यूलिया और मार्था, दोनों ट्विन्स है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि कौन कौन है। तो इसलिए हम लोग मार्था बन के रह रहे हैं एंड कोई हमें जान नहीं पा रहा है। तो ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है एंड इसके जो डैड है वो उसके दोनों डॉटर्स को इक्वली लव करते हैं, लेकिन इसकी जो मॉम है ना वो मार्था को ज़्यादा लव करती है, ठीक है। यूलिया से उसको पता नहीं कुछ हेटरेट है, उसको कुछ हेट है यूलिया से। तो वो एक चीज़ है, उसके मॉम को पता नहीं क्या क्या वो चीज़ है, लेकिन वो हेट करती है यूलिया को। उसकी डॉटर है फिर भी। ठीक है, फिलहाल हम लोग बाहर बहुत सही लग रहा है यार ये बाहर का नज़ारा, वाह। तो ये है पूरा घर, कुछ ऐसा है। अमेजिंग। ओह, तो ये रहा वो स्पैरो जिसकी हमें फोटो खींचनी है, ठीक है। Okay, you will use it to take photos throughout the game, ठीक है। Some photos will have hidden elements that will progress the game story. तो ये काफ़ी काम आने वाला है ये कैमरा पूरी गेम में, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये कैमरा। ये पूरी स्किन है, कैमरा की स्किन है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सही लग रहा है ना, नाइस। ठीक है,
अबे अबे रुको रुको रुको, यूज करना था, रखना नहीं था, 1 मिनट। चलो लेट्स यूज इट। ठीक है, ओपन दी एडवांस्ड। ओके ओके, ठीक है, इससे हम लोग सब बहुत सारे सेटिंग्स है जो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको, मुझे सब सेट करना पड़ेगा। ये फिलहाल आउट ऑफ फोकस में है, तो इसको फोकस में लाते हैं। चलो फोकस में आ गया। चलो लेट्स कैप्चर इट। बढ़िया। Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. ठीक है, चलो अभी हमें जाना है एक जगह पे। Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. ओके, तो ये पूरा बेसमेंट है इनका। ओके चलो। Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Okay, to develop a photo, you'll first have to use an enlarger. Okay. ठीक है। ठीक है, तो ये फोटो हमने खींचा था, तो इससे हम लोग चूज करते हैं, जिसको हम लोग रखते हैं इधर। ठीक है, ये लेफ्ट में जो हमें दिख रहा है उससे हम एडजस्ट कर पाएंगे अलग अलग सेटिंग्स। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये फोकस में नहीं है। ओके ठीक है। To achieve ideal exposure, take the paper out of the developer when the timer is in the green zone. Okay, ठीक है। बढ़िया, चलो फाइनली ये फोटो मिल चुका है हमें, बहुत ही सही। Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. ठीक है, अभी जो भी हमने किया था वो सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए किया था, देखने के लिए कि कैमरा जो है चल रहा है कि नहीं। तो फिलहाल अब जो है हमें खुद की फ़ोटो लेनी है, यानी कि हमें एक सेल्फी लेनी है, तो हम लोग वो कर लेते हैं। चलो, एंड ये पता नहीं ये क्या है, इतने सारे बैरल्स, ये शायद से वाइन, ये लोग वाइन बनाते क्या इसमें, पता नहीं क्या, उसी के लिए रखे होंगे ये सब। These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my Okay. dolls. The puppets I used to play with were made here.
I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Okay, चलो. Camera is set up with the self-timer. ठीक है, फाइनली हमने सेल्फी ले ली हमारी. एंड अभी उस फोटो को ले जाते हैं वापस. आई गेस वो डार्क रूम में ले जाना पड़ेगा हमें. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Okay. Finally, perfect picture. Oh, Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear okay. now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. ओके तो न्यू चैप्टर द रोल्स करके. तो ठीक है, अभी प्लान ऐसा चल रहा है कि हमें जाना है उस लेक के पास. वो लेक जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे वो वाइट लेडी की स्पिरिट घूमती रहती है, जहाँ पे जो है मार्था की डेथ हुई थी, वही लेक पे हमें जाना है. क्योंकि बहुत पहले जो है हमने जो है उधर कैमराज सेट किए थे. टोटल 3 कैमराज है उधर, 2 या 3 कैमराज है जो उधर सेट किए हुए. तो उसी कैमराज को हमें वापस लेके आना है इधर. एंड उसमें से हमें पता चलेगा, उसमें जो भी फोटोज़ रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेगी ना, उसमें से हमें पता चलेगा कि क्या है, मतलब कुछ कैप्चर हुआ है कि नहीं उसमें, उस जगह के बारे में, वो लेक के बारे में कुछ कैप्चर हुआ है कि नहीं, कोई इंसिडेंट अगर कोई कैप्चर हो गया हो तो वो हमें देखना है. लेकिन वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए इस घर से. तो वो चाबी कहाँ पे है? ये क्या है? Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark.
ओके ठीक है, तो हमें फ्लैश मिल चुका है। ऑब्वियसली रात का समय है तो फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, तभी क्लियर फोटोज आएंगे। ओके ये रही चाबी। फाइनली जो बाहर का नज़ारा दिखता है एक बार, ये बालकनी है, ऐसा कुछ दिख रहा है यार रात के समय यार, और भी थोड़ा क्रीपी लग रहा है ये जगह। चलो चलते जल्दी से, ये जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल कर लेते हैं। लेट्स गो। The camera can be used in very dark lighting by attaching the flash. Okay. वाओ, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही भाई, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। लेट्स गो। कितना स्पूकी लग रहा है यार। ओ भाई साहब, ऐसी जगह पे रह रहे हैं ये लोग, मतलब प्रॉपर्टी, ये इधर घर है एंड इधर देखो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू, पूरा खाली है। ओह I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it. एक मिनट, मुझे मैप देखते रहना पड़ेगा वरना मैं घूम के कहीं और चला जाऊंगा। एक मिनट। Rushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? शिट, ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है। ठीक है, ठीक है चलो। German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. ठीक है। Okay. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. अबे रुक, फोटो लेना है इसका, शायद से इसी का फोटो लेना था क्या? नहीं,
ये जो अभी हमें दिख रहा था ना, वो जो लेडी दिख रही थी, आई गेस वो शायद से मार्था की स्पिरिट है। ऐसा हो सकता है यार, पता नहीं, मार्था की स्पिरिट घूम रही है। The cameras are somewhere around here. अबे कैमरा ये रहा। ओके, Two cameras left. ओके, तो पहला कैमरा मिल चुका है। चलो चलो, देखो गाइस, इसी जगह पे जो है मार्था की डेथ हुई थी, यानी इसी जगह पे हमने देखा था कि मार्था की बॉडी जो है इधर लेक के अंदर मतलब हमें मिली थी। One more camera to collect. ओके, चलो फाइनली। A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. ओके, बढ़िया। How could it have ended up here? It looks familiar. अबे ये लाइट कम क्यों हो गई है? शिट गाइस, इसकी जो लाइट है वो कम हो गई है। देखो ना, पहले ज्यादा थी। अबे यार, मैं तो भाग रहा हूँ। जो भी हो देखा जाएगा। कुछ आवाज आ रही है, हल्की सी आवाज आ रही है गाइस, ऐसे कोई, जैसे कोई डेविल ना हो, ऐसे कोई बोल रहा है ना भारी आवाज में, ऐसे कोई बोल रहा हो, विस्पर कर रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। ओके, ओह छोड़, भागो। लेट्स रन। कहाँ? इधर भागते हैं। बढ़िया। अबे भाई, घर जाना था, ये कहाँ आ गए? शिट, पहला गूज़बम्स आया मुझे इस सीन में। चलो, पीछे तो है नहीं वो, मुझे लगा हमारे पीछे होगी। चलो चलते हैं यार, कोई ऑप्शन नहीं है, और तो कुछ नहीं कर पाएंगे हमें। अभी ये तो वो वाली जगह जहाँ पे, पता नहीं, एक मिनट, इसके घर पे भी, अबे ये तो इसके घर वाली जगह है। इसके घर पे जहाँ पे वो मार्था की बॉडी रखी थी ना, ये सेम वही जगह है। शिट, ये क्या है? अब ये क्या हो रहा है? ओह,
एक तो ये अबे भाई क्या है ये? ओके गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सीन था ये। मतलब सोचा नहीं था ऐसा कुछ ये लोग दिखाने वाले हैं, बट बहुत बहुत सकते एक डिस्टर्बिंग सीन था। यार ये पानी कहाँ से कब अचानक से भर गया अबे? Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Okay, new chapter, The Woods. 3 days after Martha's death. Okay, तो गाइस ये है वो फ्रेम जहाँ पे हमने वो फोटो खींचा था हमारा। तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा क्यों लगा है यार, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो, फिलहाल हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? ओके, शायद से इधर ही जाना है। यप, That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. चलो इस बार हम लोग खुद के कपड़े पहनते। ओके, This dress is only for special occasions. ओके, चल It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game. But most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Okay. Protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of citizens. Nesma Madonna.
ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि द कैमराज एट द लेक, तो वो हो गया. ठीक है, द टैरोट कार्ड्स, तो वो हमें देखना पड़ेगा. मॉमी टुक माई टैरोट कार्ड्स, नैनी एंड आई यूज टू प्ले विद देम व्हेन आई वाज लिटिल. फाइंड द टैरोट कार्ड्स, तो वो हमें ढूंढना है वो कार्ड्स. एंड द सोल इन द फोटो, ये पता नहीं. दे से दैट टेकिंग फोटोज ऑफ पीपल स्टील्स देयर सोल्स. मार्था की फोटो लेनी है यार, वो चीज रह गई है ना. ओके, एक बार चलते हैं यार, नीचे की तरफ चलते हैं जल्दी से. Walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and Okay. doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed ठीक है, चलो सबसे पहले पेपर पढ़ लेते हैं. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. ओके, ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. इसको रख देते हैं. पेपर का आई गेस ऑब्जेक्टिव हो गया ना. ठीक है, ये हो गया है. इसकी बॉडी है क्या? अबे है, इसकी बॉडी अभी तक है. ठीक है, तो इसकी फोटो लेनी है, तो वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से. चलो, आउट ऑफ फोकस, इन फोकस, प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड. ठीक है, लेट्स गो. फाइनली. Damn. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. तो वो हम लोग इस रूम के अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा. These could be of use to me. Mummy's medicine. Will they do her any good? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? The tape recorder, नया ऑब्जेक्टिव है. This is Dad's audio recorder. He uses it for work. Listen to the tape. Okay. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. With this lens, I can shoot very close up. वाओ, बहुत सारे लेंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Red filter for super high contrast photos. Blue filter. Ideal for indoor photos. वाओ. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. No, my voice
want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. ठीक है. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. तो गाइस अब हमें पता चलेगा राज की बात. ठीक है, बहुत सारे इमेजेस है इसमें. ओह, तो आई गेस टोटल 4 ही है इसमें. या आई गेस 4 ही है. हम लोग 4 ही पाएंगे. अबे ये एक बार देख लेते हैं ना. बहुत सारे फोटोज यार, बहुत सारे फोटोज को हमें कैप्चर करना है. सभी को एक एक करके कर लेते हैं ना. चलो. ओके, तो ये फोटो आ चुका है. वाह, ठीक है. ओके, The photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Her face can't tell me anything anymore. I know that, really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Here I was running toward the pier, just as I remember. चलो ये ले लिया. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha.
Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. तो वाइट लेडी कौन है पता है? जब हम लोग उस लेक की तरफ जा रहे थे, आपने देखा होगा एक स्पिरिट आ रही थी जिसने हमारा हाथ पकड़ा था। वो जो लेडी थी जिसने पूरा वाइट ड्रेस पहना था, तो उसी का नाम वाइट लेडी है। एंड उसकी स्पिरिट काफ़ी टाइम से जो है उस लेक के पास घूमती रहती है। तो हम लोग उसकी मदद लेने वाले हैं। वाह, तो हम लोग उसको जाके पूछने वाले हैं पूरे इंसिडेंट के बारे में। एंड स्कैरी तो है यार, वाइट लेडी एक्चुअल में स्कैरी है। एंड उसके इंटेंशंस के बुरे हैं या अच्छे वो नहीं पता हमें उस वाइट लेडी के। तो फिलहाल ये सब तो हो गया है ना, सब कुछ हो गया वैसे। ओह, ये कार्ड्स ढूंढने हैं, ये एक रह गया है। The spirit of the white lady lives in the lake. Nanny always told me her story before going to sleep. Could it have some truth in it? Okay, requirements. Tarot cards चाहिए हमें, तो वो कार्ड्स पहले ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद लेक की तरफ हमें जाना है। ओके General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Okay. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. ओके तो गाइज मुझे लग रहा है कि इस जगह पे हमें वो कार्ड्स मिल सकते हैं, क्योंकि यही एक वो रूम है जो मुझे हाई चांसेस लगे। This is Mummy's jewelry. Okay. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink key ring. Okay. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? तो एक दरवाज़ा है जो लॉक्ड है। आपने पता नहीं वो नोट किया होगा कि हम लोग मतलब आपने वो दरवाज़ा देखा कि नहीं, लेकिन हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उससे होके गए थे वो दरवाजे से, एंड वो पूरा लॉक था वो दरवाज़ा। तो उसकी चाबी भी हमें मिल सकती है कहीं ना कहीं, एंड वो भी अब इस ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, माई हैप्पी रूम। ओके तो उसके अंदर क्या है वो जानना पड़ेगा हमें, एंड उसके लिए हमें कीज चाहिए। ओके इन द लेटर नैनी डज नॉट से वेयर शी लेफ्ट द कीज, दे हैड अ पिंक की रिंग अटैच्ड टू देम। ओके Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. ओके
Okay, I found this note among mommy's things. It's Martha's handwriting, but it doesn't make any sense. The message reads, "Dear mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes." ओके तो ये पुरानी बात है एंड मार्था को ये डाउट है कि हम हमारा ये जो कैरेक्टर है जो हम प्ले कर रहे हैं अभी वो प्रेग्नेंट है. ठीक है, ये कुछ काफ़ी पता नहीं ये कहाँ से आ पड़ा है ये वाली चीज़. Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. स्टोरी और कितनी कॉम्प्लिकेट होने वाली है वो नहीं पता, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रैक पे रहे, स्टोरी के ट्रैक पे रहे, अलाइंड रहे जैसे स्टोरी चल रही है एंड जाने थोड़ी क्लैरिटी रहे कि क्या चल क्या रहा है सीन, कंफ्यूज ना हो. ओह कार्ड्स मिल गए गाइस, ये रहे टैरोट कार्ड्स. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? ओके तो गाइस देखो अभी एक ऑब्जेक्टिव है, वो है लेक में जाने का. तो हम लोग वही करते हैं, लेक पे ही जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है. My bike. The wheel is deflated as usual. A Oh. bicycle pump will solve this. ठीक है, हम लोग ये साइकिल लेके जा सकते हैं, लेकिन पंप कहाँ पे ढूंढे. ठीक है, फाइंड द पंप. चलो, भी एक नया टास्क मिला हमें. ओके गाइस, फाइनली हमें मिल चुका है. Here's the bicycle pump. यप, एक्चुअली मैं बहुत घूमा, पता नहीं इधर से उधर गया, लेकिन ये इधर ही था. ठीक है, फाइनली मिल गया ये. चलो गाइस अपनी साइकिल लेके निकलते हैं. ओके, it's done. So guys, it's time to ride the bicycle. एंड ऑब्वियसली हमारे पास साइकिल है तो हमें एक अच्छा रूट फॉलो करना पड़ेगा उसमें. ठीक है, एक और रास्ता है दूसरी तरफ, वो पूरा घूम के जाता है, लेकिन वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने देखा नहीं है वो कैसा है रास्ता.
ओह ओह अबे ये कौन है? Hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt! The gunfight in the woods. Oh, oh, shit. अबे ऐसे इसको क्या हो गया ऐसे? Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they Shit, done ये to लापो you? है जिसके हम बात कर रहे थे पहले. Shit. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. I give you back your innocence. 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 I give you back your appearance. I give you back your appearance.
two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha, sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. ओके गाइस, हम लोग जिंदा है. वाओ, हम लोग जिंदा है. हमें लगी थी गोली, ठीक है, वो कोई सपना अपना नहीं था. हमें गोली लगी है एंड लेकिन हम लोग जिंदा है, विच इज़ अ गुड थिंग. द ब्यूरियल 4 days आफ्टर मार्था's डेथ. ठीक है, चलो. तो गाइज देखो गाइज, आज के लिए इतना ही. तो फिलहाल ये वाला पार्ट मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आई गेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है जो सेकेंड पार्ट है. काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया, काफ़ी कुछ देख लिया. तो अभी देखते हैं कि स्टोरी आगे जाके कहाँ जाएगी. तो लेट्स सी क्या होता है. तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस फन सीरीज एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गेम जो अभी हमने खेला. तो अगर आपको अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेमस्टार. मिलेंगे बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ एंड ऐसे ही करते करते हम लोग जो है इस गेम को ख़त्म करेंगे एंड देखेंगे एंड में क्या होता है, मिस्ट्री क्या है, क्या हुआ था मार्था के साथ एंड बहुत सारी चीज़ें और भी जो भी रहेगी वो हमें पता चलेगी. तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ. Until then, take care, stay happy and see you very, very soon. Bye.